Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we will discuss about dispersion and its types. So without wasting your time, let us start with dispersion. The dispersion is related to the broadening of input signal at the output side. Because of this, the considerable errors are produced at the output side. Consider the case of a digital data transmission using fiber optic cable. The amplitude of signal is as shown in this figure. Here the input signal is required to transfer is 101010. The amplitude levels and the time duration for each bit is as shown in this figure. Now the widening of input signals takes place as the signal starts passing through an optical fiber. So at the output side, the mixing of signal takes place. It is very difficult at the output side to distinguish the different signal. Thus an interference of symbols takes place at the output side, which is called as inter-symbol interference. This can be shown in this output signal figure. Here the input pulses we have to transfer towards the receiver side, and at the receiver side, as we can see, the pulses are get recombined and we have to separate out them. So let consider T be the duration of input pulse. Then if we want to avoid the dispersion taking place in an optical fiber, then we will have to limit the bit rate Bt, which can be given by Bt is less than or equal to 1 upon T. Here the dispersion is mean simply the widening of pulse or the spreading of pulse. So at the input side, the pulses are separately out and they are separately present, but at the output side they are present in a very near to each other and they are getting here recombined. So here they are spreading. This is nothing but dispersion. Okay, so this bit rate here 2t represents the time period of broadened pulse when the dispersion occurs. This equation gives the value of maximum bit rate. Guys, when an input signal is passing through an optical fiber, then the dispersion depends on the distance between input and output side. The dispersion is also depends on the time period. So in case of multimode step index fiber, the dispersion is maximum, so the bandwidth is comparatively less. It is one of the order of tens of megahertz. So dispersion in a multimode step index fiber we can see in this figure. Here the input signal which is having some amplitude. Whenever this input signal is passing through the multimode step index fiber, then we will get the amplitude reduction at the receiver side. Okay, as compared to this multimode step index fiber, in case of multimode graded index fiber, the less dispersion is obtained. Here we can see again, this is the amplitude of input signal, and after passing the signal through this multimode graded index fiber, we will get the less dispersion as compared to the step index fiber. In the third case, the minimum dispersion occurs in a case of only single mode step index fiber. So the higher transmission bandwidths are obtained with the help of this step index fiber, and this bandwidth can be in the range of gigahertz. The dispersion in a case of single mode step index fiber can be seen in this diagram. Here the input signal which is having some amplitude, and after passing the signal through the dispersion through the single mode step index fiber, then we will get here less dispersion as compared to the multimode step index fiber and multimode graded index fiber. Okay, so we know that in order to transfer an electrical signal using fiber optic communications, it is necessary to convert the signal into optical signal. For this, the light source is used.
That means we are getting an optical signal corresponding to an electrical signal. Thus, an electrical signal modulates an optical source. So, this modulated signal excites all the modes at an input of fiber optic cable. Each mode contains an optical component, and this optical component is equivalent to an electrical component of input signal. Okay, so whenever these optical components are traveling through that optical fiber, then a time delay is produced for each optical component. So thus there is a group delay per unit length which is present, and this is denoted by T of G here. Okay, the input source which is having different optical components are present, so that's why which is having again different velocity. Hence the group velocity is here defined as Tg is equal to L upon Vg, where the Tg is the time group delay, L is the length of optical fiber, and Vg is the group velocity. Remember here Tg and Vg are inversely proportional. So here group velocity is uh, the velocity with which the energy of pulse is passing through an optical fiber, and this group velocity can be defined as C upon d of beta upon d of k. Here C is nothing but velocity of light in free space having value 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Beta is the propagation constant along axis of optical fiber, and k is the constant value having value 2 pi by lambda. Okay, and this lambda is nothing but wavelength of optical signal. Since this group velocity in equation, suppose this is equation number 2, this contains the factor k, so this velocity depends on the wavelength. Yes, k is proportional to the wavelength, that is lambda. Thus every spectral component takes different amount of time period to reach at the output. Because the group velocity depends on the wavelength, it means the group delay given by this equation is also dependent on the wavelength. Thus all the spectral components are not reaching at the output side at the same time, and this can be give the spreading of pulses at the output side. So the amount by which the spreading of optical signal takes place is nothing but dispersion, and it is given by d is equal to 1 upon L d by d lambda into T of G. Here L is the length of optical fiber, lambda is the wavelength of optical fiber, and T of G is equal to group delay. तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, डिस्पर्शन इज नथिंग बट सिंपली आपका वाइडनिंग ऑफ पल्स होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ पल्स होता है. जो भी हम इनपुट सिग्नल पास करेंगे टुवर्ड्स द रिसीवर साइड, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हम डिफरेंट टाइप्स के केबल यूज़ करेंगे, जिसमें हमने देखा जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है इसमें ज़्यादा डिस्पर्शन होता है. उसके बाद मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में स्टेप इंडेक्स से थोड़ा कम डिस्पर्शन मिलता है, और जो भी हमारा सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसमें हमें बहुत ही कम डिस्पर्शन मिलता है, क्योंकि सिंगल मोड फाइबर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मोड. ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ऑप्टिकल सोर्स रहता है उसको डिफरेंट वेवलेंथ प्रेजेंट होता है. डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट सोर्स की वजह से उसका जो टाइम वेलोसिटी है और वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट रहेगा. तो जब भी वो स्टार्ट करेंगे पास होने के लिए फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो रिसीवर तक जाने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा, और वो एक ही टाइम में वहाँ पे रिसीवर तक नहीं जा सकते. सो दैट्स वाई वहाँ पे जो रिसीवर साइड है वहाँ पे आपको सम डिले डिफरेंस मिलेगा, वहाँ पे जो उनके टाइम पीरियड है उसमें, और जिसकी वजह से आपका जो पल्स है वो स्प्रेड हो जाएगा. सो द स्प्रेडिंग ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल टेक्स प्लेस एट द आउटपुट साइड which is nothing but dispersion. Okay, so I think it is clear to you. In the next here the classification of dispersion. Broadly there are two types of dispersion. They are as follows. The first is intramodal dispersion and the second is intermodal dispersion. The intramodal dispersion is again divided into two types. The first is material dispersion and the second is
First, we will see intramodal dispersion and their types. In intramodal dispersion, the light source is used at the input side. It converts an electrical signal into optical signal, but this light source does not emit a single wavelength. In actual practice, these light sources emit band of wavelength. If the LED is used as a light source, then this problem is more severe. So the different spectral components will reach at the output at different times. This gives the spreading of output pulse, which is called as intramodal dispersion. This dispersion is divided into two types. The first is material dispersion and the second is waveguide dispersion. First, in a material dispersion, which will depends on the refractive index of material which is used to manufacture the fiber optic cable. तो जो भी मटेरियल डिस्पर्शन होगा आपका वो टोटली डिपेंड होगा जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका मटेरियल का जो हमने यूज़ किया है ऑप्टिकल फाइबर के लिए. ठीक है. हियर द ग्रुप वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट and the group velocity is also function of refractive index of the material. Now depending on the light source, each spectral component of input source will be having different wavelength. Thus each component is traveling with a different speed through that optical fiber, which gives the spreading of the optical pulse, which is called as material dispersion. Here the material dispersion is denoted by d of m is equal to sigma of m upon L into sigma of lambda. तो यहाँ पे जो आपका सिग्मा m है ये जो स्प्रेडिंग पल्स है आपका बिकॉज ऑफ मटेरियल डिस्पर्शन, और जो सिग्मा लैम्डा है ये स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ सोर्स है इनिशियली जो आपका प्रेजेंट था, और स्प्रेडिंग होने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा विड्थ मिला है दैट इज सिग्मा ऑफ m, एंड L इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल. तो जो भी डिस्पर्शन हो रहा है, जो भी आपको ग्रुप वेलोसिटीज़ का डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे ड्यू टू मटेरियल की वजह से अगर से आपको मिलता है तो हम उसे सिंपली मटेरियल डिस्पर्शन बोलेंगे. ठीक है. सेकंड है हमारा वेवगाइड डिस्पर्शन. whenever the optical signals are passing through the fiber optic cable, then the optical cable is acting as a waveguide. Now there is a variation in the wavelength of each spectral component emitted from the source, as well as the angle made by each light ray with respect to the axis of optical cable is also different. Because of this angle, the wavelength of light, since there is a variation in the angles, so all the light rays are not reaching to the output at the same time, and this gives dispersion at the output, which is called as waveguide dispersion. In case of multimode fiber, almost all the light rays are traveling away from cutoff axis, so in this case waveguide dispersion is negligible. In case of single mode fiber, the waveguide dispersion is given as d of w is equal to sigma of w upon L into sigma of lambda. तो जो सिग्मा ऑफ लैम्डा है आपका फिर से यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑफ विड्थ है बिकॉज ऑफ वेवगाइड डिस्पर्शन. L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड सिग्मा ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ सोर्स. जो हमारा मटेरियल डिस्पर्शन है दोनों के भी फॉर्मूले सेम है. यहाँ पे सिर्फ आपका जो विड्थ ऑफ स्प्रेड पल्स होगा इन मटेरियल डिस्पर्शन में ड्यू टू मटेरियल की वजह से होगा, और यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्शन होगा ड्यू टू वेवगाइड की वजह से होगा. ओके. नेक्स्ट इज द intermodal dispersion. This type of dispersion is also called as modal dispersion. This dispersion takes place in a case of multi-mode fiber optic cables. Hence, here the different modes are traveling with different group velocities inside an optical fiber. Some modes are traveling with maximum speed, while some are traveling with minimum speed. Thus, there is a difference between transit time of these modes. So, all the modes are not coming to the output at the same time, which gives the spreading of output pulse. This is called as dispersion, or we can say here the intermodal dispersion. Okay. So, in case of a multimode step index fiber, this dispersion is more. It can be reduced by choosing an optimum refractive index profile. In case of graded index multimode fiber,
This dispersion is less by a factor of 100 than multimode step index fiber. This is because the refractive index profile of a multimode graded index fiber. We will see after that. For a single mode fiber, this dispersion is almost zero because it is having only one mode. So thus in case of single mode step index fiber, because of this, very less intermodal dispersion is obtained. Okay, so here we will see the intermodal dispersion in a multimode step index fiber, and after that intermodal dispersion is first is intermodal dispersion in a multimode step index fiber. In case of multimode step index fiber, we will consider the two modes. The first is fastest and the second is slowest mode. The light ray which is passing along the axis of optical fiber, which is considered as the fastest mode, and while the light ray which is incident at the interface of core cladding layer is having slowest mode. This ray is making an incidence angle equals to the critical angle, which can be seen in this arrangement, and this ray making an angle equal to critical angle is called as extreme meridional ray. The axial ray here requires less time to reach at the output, so this time period can be calculated by the general formula T minimum is equal to distance by velocity. तो जैसे हमने अभी देखा है, यहाँ पे दो मोड प्रेजेंट है, एक फास्टेस्ट मोड है और दूसरा स्लोवेस्ट मोड है. जो एक्सिस को हमने कंसिडर किया है एक्सियल रे जो है हमारा, जो हमारा पास हो रहा है अलोंग टू दैट एक्सिस, जिसे हम फास्टेस्ट मोड बोलेंगे, और दूसरा जो है हमारे पास एक्सट्रीम मेरिडियनल रे जिसे हम स्लोवेस्ट मोड बोलेंगे. तो हम पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे दोनों का. एक जो स्लोवेस्ट मोड है उसको टाइम कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है, और जो फास्टेस्ट मोड है उसको भी टाइम कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और बाद में हम दोनों का डिफरेंस लेंगे. दैट मीन्स जो भी आपका डिस्पर्शन होता है, स्प्रेडिंग ऑफ पल्स होता है, तो जो ग्रुप वेलोसिटीज़ और ग्रुप टाइम डिलेज का जो डिफरेंस होता आता है आपका, वो आपका डिस्पर्शन रहेगा ये केस में. ठीक है, तो पहला हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्सियल रे, क्योंकि ये आपका फास्टेस्ट मोड है. ठीक है, तो जनरल फार्मूला है हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. हमने टी को यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, तो ये बनेगा आपका टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. ओके, सो फॉर एक्सियल रे मिनिमम टाइम इज इक्वल टू L upon C upon N1, so which is equal to Ln1 upon C, where L is the length of fiber cable, C is the speed of light, and N1 is the refractive index of core. Now the light ray is taking more time to reach at the output is the extreme meridional ray. This time period is denoted by here T max, and this is given by T max is equal to L upon cos theta divided by C upon N1. Here the in case of extreme meridional ray, the incident angle is making angle is theta, so that's why we have to take here L upon cos theta term. Okay, so here in T max is equal to ln1 upon C cos theta. L is the length of optical fiber, theta is the angle made by light ray with respect to the axis of optical fiber, N1 जो है आपका वो रहेगा refractive index of core layer, and C is the velocity of light. Okay, so in after that, according to Snell's law, the critical angle theta C can be written as sin of theta C is equal to N2 by N1. So we can here put value of sin of theta C is equal to cos theta, where the N2 is nothing but refractive index of cladding layer, and N1 is the refractive index of core layer. So after that, the sin theta which is equal to cos theta having value N2 by N1, just put value of cos theta in this equation, so it will become L into N1 upon C into N2 by N1. तो ये यहाँ पे आएगा आपका Ln1 स्क्वायर अपॉन C/2. ठीक है, अभी हमारे पास दो टाइम पीरियड आ चुके हैं, एक पहला है T मैक्स और दूसरा है T मिन, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो भी डिफरेंस है हमारा वो हम निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे since the here axial rays are fastest rays and extreme meridional rays are slowest rays,
So there is a delay difference between these two rays, and the delay difference is denoted by here del of Ts, which is given by Tmax minus Tmin. Here Tmax is the time required for extreme meridional ray to reach at the output, and T minimum is equal to time required for axial ray to reach at the output. Okay, so we have to just put here values of Tmax and Tmin. So Tmax is equal to ln1 स्क्वायर अपॉन Cn2 आया है आपका, और उसके बाद जो हमारा Tmin है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था वो है हमारा ln1 डिवाइडेड बाई C। तो हमने यहाँ पे पुट किया है ln1 डिवाइडेड बाई C। ये हमारा इक्वेशन आ गया Tmax एंड T मिनिमम का। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे। जो हमारा ln1 स्क्वायर बाई Cn2 है वो हमें कॉमन लेना है। So multiply this term by n2 by n1, so that here in next step we can यहाँ पे हम we can take common ln1 square divided by Cn2 term. So in the bracket the remaining term is 1 minus n2 by n1। ठीक है, तो ये आपका रहेगा डिफरेंस आएगा यहाँ पे, और del of Ts is equal to ln1 square upon Cn2 in bracket here the cross multiplication n1 minus n2 divided by n1 आएगा आपका। Here at this place n1 minus n2 we can also put del of n, that is difference, or we can say it is the refractive index difference between core and cladding layer, which is given by del of n. Okay, so in final equation we will get del of Ts is equal to ln1 square upon Cn2 into del of n upon n1। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे जो डिले डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ इंटरमोडल डिस्पर्शन इन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में आ चुका है हमारा। ठीक है, तो जो भी हमारा इसके बाद का केस रहेगा वो है इंटरमोडल डिस्पर्शन फॉर मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा, और डेल Ts का फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज दी मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, and here the refractive index profile is as shown in this figure for graded index fiber. This refractive index profile is parabolic in nature, and it is maximum at the axis of fiber optic cable। कभी भी जो एक्सिस ऑफ आपका फाइबर रहेगा ये है आपका एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, यहाँ पे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा कभी भी फॉर दी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, and this gives less dispersion as compared to the multi-mode step index fiber optic cable due to the refractive index profile of that graded index fiber। Okay, so the different ray path for a multi-mode graded index fiber we can see in this figure. The light ray which is passing along the axis is called as axial ray। This is our axial ray। Okay, जो हमारा एक्सिस ऑफ फाइबर से पास हो रहा है जिसे हम बोलेंगे एक्सियल रे, एंड वाइल द लाइट रेज पासिंग अवे फ्रॉम द एक्सिस आर कॉल्ड एज मेरिडियनल लाइट रेज। तो ये जो हमारे दो है मेरिडियनल रे ए एंड बी, जो हमारे लाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है मोड्स, ये हमारे मेरिडियनल रे है प्रेजेंट यहाँ पे। ठीक है, दीज लाइट रेज आर ए एंड बी, वी कैन सी इन दिस फिगर। These light rays follows the sinusoidal path, thus the meridional rays have to travel more distance to reach at the output as compared to the axial light ray। So in case of multi-mode step index fiber, there is a relationship between refractive index and the group velocity। So we can see here, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हमारा ग्रुप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का। तो जो एक्सियल रे होता है आपका, जब हमने देखा अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रोफाइल होता है फॉर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का वो पैराबोलिक होता है, और जो भी इसका कोर पार्ट है यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो जो एक्सियल रे है हमारे वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा आपका मैक्सिमम रहेगा। तो इफ़ यू पुट हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज मोर, यहाँ पे ये बड़ा होगा तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका ग्रुप वेलोसिटी का, तो डेफिनेटली जो हमें यहाँ पे Vg मिलेगा ग्रुप वेलोसिटी, ये वैल्यू आपका मिनिमम रहेगा। ठीक है, एंड फॉर मेरिडियनल रे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये जब कम होगा तो ये बढ़ेगा। सो द Vg इज मैक्सिमम इन केस ऑफ मेरिडियनल रे। ओके,
So they are traveling through a portion having a less refractive index. Since here the group velocity is inversely proportional to the refractive index and they are traveling with more speed. Okay, यहाँ पे speed जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा. So at the final stage there is a very small delay between the axial rays and meridional rays at the output, and this delay difference is given by del of Tg is equal to ln1 del square upon 2c. तो इन केस ऑफ मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डिफरेंस नहीं रहेगा लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से जो हम बोलते हैं कि डिस्पर्शन इन केस ऑफ मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज लेस एज कम्पेयर टू दी स्टेप इंडेक्स फाइबर ड्यू टू दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल. ठीक है, तो हियर इन दिस इक्वेशन डेल ऑफ टी जी जो है आपका वो डिले डिफरेंस रहेगा. उसके बाद जो एल है वो लेंथ ऑफ फाइबर है. सेकंड इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर. डेल इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस and c is the velocity of light. Okay, so here as we know that the relation between numerical aperture and del which is given by na square upon 2 n1 square. तो जो हमारा ये इक्वेशन है डेल ऑफ टी जी इज इक्वल टू एल एन वन इंटू डेल स्क्वायर अपॉन 2c. हमें यहाँ पे सिर्फ जो डेल का वैल्यू है जो हमारे पास अवेलेबल है ये आपको यहाँ पे पुट करना है और बाद में आपको ये इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, ln1 अपॉन 2c इंटू न्यूमेरिकल एपरेचर रेज टू पावर 4 अपॉन 4n1 क्यूब. और जो हमारा इक्वेशन है वो RMS पल्स ब्रॉडनिंग में भी हम निकाल सकते हैं, जो हमको यहाँ पे मिलेगा सिग्मा ऑफ जी इज इक्वल टू ln1 डेल स्क्वायर अपॉन 20√3 इंटू सी. So this is the intermodal dispersion for multimode graded index. So guys, we have covered the types of dispersion, intramodal and intermodal dispersion in this video lecture. Now we are going to end our today's video lecture with the motivational quote, and today's motivational quote for you is: people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Thank you for watching my videos. Thank you.